अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum dear students, Mathematics Grade 3 Punjab Curriculum and Textbook Board Lahore. Dear students, as you know, we have started Unit 3 Fractions and we have completed Express the fractions in figures and vice versa. Match the fractions with related figures. Recognize proper and improper fractions. Differentiate between them. Identify equivalent fractions and write equivalent fractions. Compare fractions with same denominators using these symbols. We also did how to add two fractions with same denominators. Represent addition of fractions through figures. Now, in today's lesson, we will learn how to subtract fractions with same denominators and represent subtraction of fractions through figures. First of all, I am going to recap what we learned in our previous lesson. We learned what is a fraction. Fraction is a part of a whole, as you can see in this figure. Then we learned common fraction. We learned about numerator and the denominator. Proper and improper fractions. Proper fractions are those fractions in which the numerator is smaller than the denominator, and the improper fraction in which the numerator is greater than the denominator, or they may be equal to each other. For example, 2 by 5 is proper fraction and 5 by 2 is improper fraction, and 7 by 7 is also improper fraction. Then we did equivalent fraction. Equivalent fractions are those fractions which look different but actually they are same, they are equal. We have to simplify them, then they will become equivalent fraction. For writing the equivalent fractions, we have to multiply it with the numerator and the denominator with the same non-zero number. Then we compare the fractions with using the sign less, greater or equal to. Addition of fractions. We also learn how to add fractions. First of all, we have to add their denominators. If the denominators are same, then we have to write it once, then we have to add their numerators. After writing, we will perform the operation of addition by adding the numerators. Then we get our answer. This is the addition of fractions. We also did through figures. In today's lesson, we will learn how to subtract fractions. Subtraction of fractions. Now let's read the text. Subtraction means you have to find the difference of the two fractions with the same denominators. यानी उनका denominators same होगा तो हमने देखना है कि हम उसको subtract कैसे करेंगे. Shahzan and Tabish bought a chocolate in which Shahzan ate 3 by 6 part of the chocolate and Tabish ate 2 by 6 part of the chocolate. How much more chocolate has eaten by Shahzan than Tabish? Shahzan and Tabish bought a chocolate in which Shahzan ate 3 by 6 part of the chocolate and Tabish ate 2 by 6 part of the chocolate. यानी शाहजैन और ताबिश ने चॉकलेट परचेज की जिसमें से शाहजैन ने 3 by 6 पार्ट खा लिया और ताबिश ने 2 by 6 पार्ट ऑफ द चॉकलेट ईट कर लिया. हाउ मच मोर चॉकलेट हैज़ ईटन बाय शाहजैन देन ताबिश. ये आपने बताना है कि शाहजैन ने ताबिश से कितना ज़्यादा चॉकलेट के पीसेस खाए. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस. सो लेट्स सी. This is the chocolate bar. It consists of 6 pieces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 by 6
8 by Shahzan, and 2 by 6 8 by Tabish. We have to find how much more chocolate eaten by Shahzan. First of all, we will write Shahzan ate 3 by 6, Tabish ate 2 by 6, and their difference 3 by 6 minus 2 by 6. So we will find their difference 1 by 6. Shahzan ate 1 by 6 part more of the chocolate than Tabish, यानी उसने 1 by 6 part ज़्यादा ताबिश से चॉकलेट का खाया. Key fact: to subtract fractions with same denominator, we subtract the numerators only. यानी जब भी आपने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रैक्शंस को जिनके डिनोमिनेटर्स जो है नीचे वाला पार्ट सेम है, तो आपने जस्ट उसके न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट 7 by 8 minus 2 by 8 थ्रू फिगर्स, यानी अब आपने इसमें फिगर्स के जरिए इनको सब्ट्रैक्ट करना है. We have 8, this is a circle and we have 8 equal parts. Now we have to show through figures, we have to color 7 parts. Then in next circle we have again 8 parts and we have to color 2 parts. Then we will find how many parts will left. 7 minus 2, 5 by 8. Then we will color 5 parts out of 8. Now dear students, hope so you have understood this concept. Now we will apply this concept in exercise 6. In exercise 6 we will solve the following questions. Question number 1, solve the following. 3 by 7 minus 1 by 7. We have to perform all the steps very carefully. Okay. Question number 5. Question number 8. You will do these two questions by yourself, and rest of the question I am going to solve here for you. Exercise 6. Question 1. 3 by 7 minus 1 by 7. 3 by 7 minus 1 by 7. First of all, we have to write here equality sign. First step is, the step will be same as we performed in our addition of fractions. We have to draw a line, combine, and we have to write it collectively because their denominators is same. So you will write it once. यानी जब भी denominator same होगा तो आप इसको just एक दफा लिखेंगे. Then we will write the top 3 minus 1. 3 minus 1 combine करके आप इसको लिख लेंगे. 3 minus 1. Now subtract them. So we have 3 में से 1 को minus करें 2 by 7. By subtracting 3 by 7 with 1 by 7 we have 2 by 7. यानी पहले आपने इन दोनों को combine लिखा, then आपने उसमें subtraction का ऑपरेशन परफॉर्म किया. 3 में से 1 माइनस किया तो 2 और नीचे लाइन लगाई और 7 एज इट इज जो डिनोमिनेटर था सेम वो एज इट इज आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 2. 5 by 9 minus 1 by 9. यानी आपने 5 by 9 में से 1 by 9 को subtract करना है. First of all, write the equality sign. Then draw a line. Write it collectively. The top are the numerators. 5 minus 1. 5 minus 1 and the denominator will come as it is 9. Now subtract 5 minus 1. It will 4 upon 9. So we have 4 upon 9 by subtracting 5 upon 9 minus 1 upon 9. यानी आपने 5 by 9 में से 1 by 9 को निकालना है, उसका फ़र्क मालूम करना है. तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने लाइन ड्रॉ की, डिनोमिनेटर सेम था, आपने उसको लिख लिया एक दफ़ा, फिर आपने जो न्यूमरेटर ऊपर था उसको लिखा, माइनस साइन लिखा और 1 लिखा. इसमें से इसको माइनस किया तो आपके पास आया 4 by 9. So our answer is 4 by 9. Now we will solve question 3. 3 by 5 minus 2 by 5. 3 by 5 minus 2 by 5. So first step is you will write the equality sign, then write it collectively. 5 once, 5 को आपने एक दफ़ा लिखा, जो ऊपर टॉप पे थे आपने उसको लिखा 3 minus 2.
सब्ट्रैक्ट किया 3 में से 2 को तो आपके पास आएगा 1 न्यूमरेटर एंड 5 डिनोमिनेटर, यानी 1/5 is our answer. The top number is the numerator and the bottom number is the denominator. ठीक है, अब ये न्यूमरेटर इससे छोटा है तो ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ हमारे पास? प्रॉपर, यस। लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वैसे ही आप अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें कि आपको पता है ये कौन सा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की कौन सी टाइप है। एक आपके पास प्रॉपर है और एक इम्प्रॉपर है। ठीक है, अभी हमने जस्ट 2 ही सीखे हैं, अभी आपने मिक्स्ड नहीं सीखा। Just you will remember there are 2 types of fraction till now, proper fraction and improper fraction. Now question number 4, 5/8 minus 2/8. 5/8 minus 2/8. 5/8 minus 2/8. So we have equality sign, draw a line, 8 and 8. We will write it once, then we will write the numerator 5 minus 2. 5 minus 2 यानी आपने इसको कंबाइन लिखा, इसके बाद आपने इसको माइनस किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आता है? यस, वी हैव 3/8. We have 3/8. 3/8 is our proper fraction. पहले आपने ये 2 steps हैं, just you have to follow these 2 steps. Don't write the answer in one step. You have to follow the steps. यानी पहले एक स्टेप डिनोमिनेटर सेम है तो आपने उसको एक दफ़ा नीचे लिखा, ये जो ऊपर न्यूमरेटर था आपने उसको कंबाइन करके लिखा, फिर आपने उसको माइनस किया तो आपके पास आंसर 3/8. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करेंगे because these questions are very easy. You have to just subtract the fraction. 5/6. यानी जब भी आपने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रैक्शंस को और ऐड करना है तो मस्ट रिमेंबर कि जस्ट आप न्यूमरेटर को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है उसका, तो वो तो आपने एक दफ़ा लिख दिया। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू write the equality sign, draw a line, write 6, टॉप पे आएगा 5 minus 3, 5 minus 3. अब इसको माइनस करें 5 में से 3 तो आपके पास आएगा 2/6. 2/6. We have 2/6. This is our answer by subtracting 5 minus 6 with 3/6. यानी आपने माइनस किया और इसका डिफरेंस हमारे पास आ गया 2/6. क्वेश्चन नंबर 7. 5/8 minus 3/8. 5/8 minus 3/8. ये आपने 5/8 में से 3/8 को माइनस करना है। Okay, draw a line, write 8, 5 minus 3, write it on the top. Now subtract them. 5 में से 3 को निकालें तो आएगा 2. Draw a line, then write 8 as it is. ठीक है, यानी आपने न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को माइनस किया और डिनोमिनेटर को जस्ट आपने एक दफ़ा लिखा क्योंकि वो सेम था, तो हमारे पास आ गया 2/8. नेक्स्ट वी विल सॉल्व क्वेश्चन 9. यू विल सॉल्व 8 बाय योरसेल्फ. ठीक है, 7/15 minus 3/15. 7/15 minus 3/15. We will subtract. Write equality sign, draw a line, write 15 collectively. Write 7 minus 3 on the top. Now subtract them. 7 से 3 minus किया 4/15. 4/15. तो हमारे पास आंसर आ गया
4/15 and it is our proper fraction. ये हमारे पास proper fraction है. क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से. यानी आपने 7/15 में से 3/15 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 4/15 आंसर आ गया. Is it clear? We have completed question 1 of exercise 6. ठीक है, अब हम करेंगे question 2 जो इसका नेक्स्ट पार्ट है exercise 6 का. Write the fractions of the colored parts and then solve. Write the fractions of the colored parts and then solve. अब आपने इसमें क्या करना है, इन फिगर्स को आपने देखना है और इन फिगर्स को देखते हुए इसका इधर फ्रैक्शन लिखा, इसका इधर फ्रैक्शन लिखा, फिर इसको माइनस किया दोनों फ्रैक्शंस को और फिगर देख के आपके पास आंसर आ जाएगा. ये तो बहुत ईजी है. सो लेट्स स्टार्ट. How many this is a circle. How many parts it consists of? 4 parts. 1 2 3 4. ठीक है, तो हम इधर लाइन लगाएंगे और नीचे लिखेंगे 4. नीचे क्या लिखेंगे? 4. Because it consists of 4 parts. अब इसमें कलर कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3. तो जो कलर्ड पार्ट्स हैं, जितने इस सर्कल के पार्ट्स यूज हुए वो आपके पास ऊपर टॉप पे न्यूमरेटर होगा. ठीक है, 3/4. It means this circle is consists of 4 parts and 3 parts are colored. Okay, next. Draw a line. How many parts total? 1 2 3 4. This circle is divided into 4 equal parts. 4. और कितने parts colored हैं? Just 1. ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करें तो हमें पता है 2 आता है, लेकिन हमने फिगर से देख के करना है तो हमारे पास आएगा, हम देख लेंगे फिगर में. पहले लिखेंगे टोटल कितने हैं? 4. और कितने पार्ट्स इसमें कलर्ड हैं? 1 2. 2/4. वी हैव 2/4. दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. जस्ट आपने फिगर को देखकर उसमें उसका फ्रैक्शन लिख देना है. माइनस आना तो हम उसको उसमें से माइनस कर लेंगे. अब नेक्स्ट देखें. Again we have circle, but this circle is divided into how many parts? We have to count them. Let's count. 1 2 3 4 5 6 7 8. This circle is consist of 8 equal parts. कितने parts हैं इसमें? 8. ठीक है, अब कितने parts colored हैं? Let's count. 1 2 3 4 5. 5 parts जो हैं इस सर्कल के वो colored है. कितने parts हैं? 5. अब नेक्स्ट देखें. अगेन वी हैव द सेम 8 parts. नो नीड टू काउंट बिकॉज द डिनोमिनेटर्स आर सेम. 8. अब कितने पार्ट्स कलर्ड है? 1 2. 2 parts आर कलर्ड. 2/8. 2/8. वी हैव 5/8 एंड 2/8. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट देम. 5/8 में से 2/8 किया तो हमें पता है 3 आता है. अब ये इस सर्कल को देख के आपने बताना है. पहले टोटल पार्ट्स लिखने कितने हैं? 8. क्योंकि 8 सेम डिनोमिनेटर है, वो सेम रहेगा. और कितने पार्ट्स कलर्ड हैं? 1 2 3. 5 में से 2 माइनस किया तो 3 ही आएगा आपके पास. सो वी हैव 3/8. इज इट क्लियर? 5/8 एंड 2/8. बाय सब्ट्रैक्टिंग देम वी हैव 3/8. नेक्स्ट we have a rectangle and this rectangle is divided into boxes, squares. So how many squares? We will count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. We have 10 parts, 10 equal parts. ठीक है, कितने parts colored है? 1 2 3 4 5 6 7. 7 parts are colored. Again we have 10 equal parts. How many parts are colored? 1 2 3 4. How many parts are colored? 4. We have 4 parts that are colored. Okay. Next. Again we have 10 parts because we have to write the denominators, that is 10 10. Here we will also write 10. How many parts are colored? 3. कितने parts हैं? 3. यानी कि हमने बताना है कि जो इसमें पार्ट्स कलर्ड हैं वो इससे कितने ज़्यादा हैं. तो 3 पार्ट्स उसके मोर हैं इस वाले बॉक्स, इस वाले रेक्टेंगल से. यानी आपने 7/10 को 4/10 में से माइनस किया तो आपके पास आ गया 3/10. 3/10.
यानी आपने फिगर को देखकर इसका फ्रैक्शन लिख देना है, सिंपल। We have completed this topic as well, and we have completed this chapter, this unit, in which we have covered how to express fraction, identify the proper and improper fraction, differentiate between them. Then we learned equivalent fraction, addition of fraction, and subtraction of fraction, and comparison of fraction. यानी हमने इसमें ये टॉपिक्स लर्न किए। बेसिक आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन क्या होता है, जो ओवर की फॉर्म में हो, ऊपर न्यूमरेटर हो और नीचे डिनोमिनेटर हो। इसमें टाइप्स पढ़ी हमने कि प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है। अब इसके बाद हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। You have to do the practice of this exercise and you will complete question number 5 and 8. We will complete review exercise in our next lesson. Till then, take care and Allah Hafiz.